Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsin, your teacher for CSC 322 Operating Systems Concepts. Students, we are studying memory management, and today would be the last lecture of the memory management. Okay, so let's start. We'll be talking about the segment memory management, and segment memory management is also considered as a virtual memory management. So we'll be talking about the segment memory management today. So let's start the lesson. Segmentation. A compiler has many tables that are built up as a compilation procedure or compilation process. That might possibility has the production of different tables that grow during the compilation process. The source, for example, source text which is being saved for producing the listing subsequently after the compilation. This text listing is basically the code, your program. जब आपके प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो आपके प्रोग्राम के प्रिंट आउट के ऊपर या उसका प्रिंट आउट लेने के लिए या उसकी हार्ड कॉपी लेने के लिए उसकी एक लिस्टिंग जनरेट करते हैं. दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो कोई उसमें एरर नहीं है. अगर एरर नहीं है तो स्टिल यू कैन हैव अ लिस्टिंग दैट यू कैन पुट अप समवेयर इन द डॉक्यूमेंटेशन. और अगर उसमें कुछ एरर्स हैं, स्टिल यू कैन जस्ट टेक द प्रिंट आउट और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके उसमें से आप एरर फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यू जनरेट कोड लिस्टिंग कॉल्ड text listing that can start from the zero and then it can grow up to the size of the program. Then there is a symbol table, the symbols or the variables that you have used in your program, the names and attributes of the variables. So that also has independent table. Then the table containing integer and floating point constants used. Integer are stored in special format and the floating point numbers are used in different format. Okay, floating point numbers also called as real numbers. The independent table that contain the listing of these integers and variable is also generated by the compiler. Then the parse tree, the synthetic analysis of your program. You might have studied it in the compiler construction कि कैसे parsing करते हैं, क्या होता है. तो it also generate a parse tree, and that parse tree is also an independent table. Finally, the stack used procedures. आपको पता है ना, when we call a procedure, we save the return address onto the stack. और मैंने आपको बताया था कि stack dynamically grow and shrink during the execution process. So obviously the stack part is also generated by the compiler. So if we'd like to see it in the form of the figure, so we can see that this is the virtual address space, and we are talking about, up till now we are talking about single virtual address space. In this single virtual address space, we need to fit in 1, 2, 3, 4, and 5 tables, and these 5 tables might bump into each other. For example, the symbol table, if you are using too much symbol and the table size grows up, so here it will bump up into the next address space over there. Similarly, the parse tree. So what we do basically, we provide some free space to grow for these type of table which are growing dynamically. आपको याद है ना, मेमोरी मैनेजमेंट के स्टार्ट में आपको बताया था कि हम खुद से कुछ एक्स्ट्रा स्पेस उसको एलोकेट कर देते हैं so that के the dynamic growth could be accommodated. So when we are talking about a one-dimension address space,
with growing table, one table may bump up into another. लॉजिकल बात है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो एड्रेस स्पेस है, ये जो एड्रेस स्पेस है हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये सिंगल एड्रेस स्पेस है. although के हम इसको वर्चुअल एड्रेस स्पेस कहते हैं, लेकिन ये सिंगल वर्चुअल एड्रेस स्पेस है. ओके, सो लेट्स सी. अगर हम इन एड्रेस स्पेस को सेपरेट कर दें, इफ वी कुड implement the concept of the segmentation, a segmented memory allow each table to grow or shrink independently of the other tables. So we can have a number of different segments from 0, 1, 2, 3, 4 up to n number of segments. I will talk about it कि ये total number of segments जो हैं ये कितने होते हैं depending upon the operating system. So here we can see that now we have a segment number 0, and that segment number 0 starts from 0, then it's growing and growing, and you can assume that कि आपका symbol table जो है वो 0 से 20k तक grow कर रहा है. उसके बाद है आपका code source text, which is your code visiting. Suppose it is growing like this up to 12k. और constant table, क्योंकि very few आप suppose constants आपने use किए हुए हैं, variables बहुत चंद एक यूज किए हुए, तो 1k might be sufficient, or it is a very small table. Then parse tree, and then finally the stack. So अब आप assume करें कि आपके पास एक नहीं, आपके पास multiple address spaces है. So we have broken up the virtual address spaces into multiple virtual address spaces, and each address space correspond to each segment. Okay, अब ये segment कैसे है और इसको implement कैसे करना है, let's talk about it. सबसे पहले देखते हैं कि इसका हमने advantage क्या हुआ. It simplifies handling of data structure which are growing and shrinking, because it has the capability to accommodate the dynamic growth. डायनेमिक ग्रोथ की मैं क्यों बात कर रहा हूं कि अगर हमें स्टार्टिंग के अंदर ग्रोथ का पता हो, रिक्वायरमेंट का पता हो, व्हाट वी कैन डू, वी कैन अकोमोडेट दैट. We can accommodate the size of that particular segment or size of that particular, for example, page. But if we do not know the actual size कि इसकी growth कितनी होगी, तो then it might create difficulties. और हमने देखा कि वो the table might bump up या overlap कर सकता है, आप दूसरे टेबल की स्टार्टिंग के अंदर उसके अंदर जा सकता है, और ऐसी सूरत में पेजिंग जो है उसके पास सोल्यूशन या तो नहीं है, अगर है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन है. So the address space of the segment is now in the form of n, local address. लॉजिकल बात है ना कि अब आपने पहले तो जाना है सेगमेंट नंबर के ऊपर कि हम कौन से सेगमेंट की बात कर रहे हैं. पिछली डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास था सेगमेंट नंबर 0, देन सेगमेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4. तो सबसे पहले तो आपको भाई सेगमेंट पिक करना. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सेगमेंट नंबर 3, segment number 3, and then you need the offset within the segment. तभी तो आप किसी precise location को address कर पाएंगे या उसको refer कर पाएंगे. Okay, so now the address space में you need two parameters. One is the segment number and second is the offset या the local address. Local क्यों है? It is local within the segment. और अगर हम n,0 की बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ वेरी स्पेशल केस. क्या केस हो सकता है वो? 0 मीन्स स्टार्ट. मजे की बात है कि हर सेगमेंट जो है अब स्टार्ट करेगा 0 से. जो पिछली एग्जांपल थी जो हम पेजिंग करते थे तो उसमें एक के बाद एक हम फिट करते थे. कोड सेगमेंट मतलब हम कोडिंग कह सकते हैं, आपका प्रोग्राम कह सकते हैं. प्रोग्राम के बाद डेटा स्टार्ट होता है, डेटा के बाद फॉर एग्जांपल स्टैक आता है. तो ये एक सिंगल लीनियर एड्रेस स्पेस थी. सिर्फ प्रोग्राम जो है वो 0 से स्टार्ट होता है फॉर एग्जांपल, और डेटा के लिए जहां पे प्रोग्राम आपका एंड होता है वो आपको ऐड करना पड़ता है 0 में, तब आपका डेटा सेगमेंट होता है. और जब डेटा सेगमेंट जहां एंड होता है तो वो सारा एड्रेस आप ऐड करते हैं 0 के अंदर, तो आपका स्टैक सेगमेंट स्टार्ट होता है. लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस ईच सेगमेंट इज स्टार्टिंग एट एन आप 0, आप एब्सोल्यूट 0 भी एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये वर्चुअल है और ये 12 उस सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस है. तो
the starting of each segment is again at 0. It is much more convenient as compared to handling of the pages. Then you can compile segments separately from other segments. Okay, आप इंडिपेंडेंट भी सेगमेंट्स को कंपाइल कर सकते हैं. आप क्योंकि हर एक सेगमेंट एक इंडिपेंडेंट लोकेशन के ऊपर जाकर या हर एक एंटिटी ने एक इंडिपेंडेंट सेगमेंट में जाकर मैप होना है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको आसानी के साथ आप उसे इंडिपेंडेंट भी हैंडल कर सकते हैं. You can put a library in a segment and share it. We could also share the library using pages, लेकिन आपने देखा it's a bit complicated और पेज फॉल्ट अकर होता है. यानी कि आपने कुछ जो पेजेस हैं उसको आपने शेयर करवा दिया प्रोसेसेस के दरमियान, और उसमें जब प्रोसेस रेफर करेगा तो वो ऑब्वियसली कोई भी प्रोसेस जब रेफर करेगा और वो पर्टिकुलर पेज शेयर्ड पेज इज नॉट इन द मेमोरी तो पेज फॉल्ट अकर होगा. ठीक है, और ये कोई लॉजिकल एंटिटी नहीं है. आपको पता है कि पेजेस आर स्कैटर्ड इनटू द पेज फ्रेम्स इनटू द फिजिकल मेमोरी ऑफ द सिस्टम. सो अगर यहाँ पे हम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेगमेंट्स तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने कोई लाइब्रेरी प्रोसीजर है और वो लाइब्रेरी प्रोसीजर जो है वो नंबर ऑफ यूजर्स के साथ शेयर करना है. So what you can do? You can simply share that particular segment among number of users or among number of processes, क्योंकि user के बेहाव पर processes are being executed. Then you can have a different protection mechanism. That is something very, very interesting. क्योंकि in this particular memory management, you can distinguish between the code and between the data and between the stack. आपको characteristics पता है. So what you can do कि कोड के लिए आप कह सकते हैं कि आप read करें और execute करें. And if someone is trying to write into the code segment, that is illogical. But you can control it. अगर accidentally any process is trying to write into the code segment, then that process should not be allowed. So आप code segment के लिए protection mechanism रख सकते हैं, read and execute. Or if we talk about the code segment, data segment की protection क्या होनी चाहिए? एक तो read हो गया और दूसरा not execute. Read and write, not execute. So if someone is accidentally trying to execute the contents of the data segment, then that should be protected. कि हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि देखें जो इंस्ट्रक्शन होती है वो अल्टीमेटली एक बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाती है. जब वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाती है, जीरोस एंड वंस का कॉम्बिनेशन होता है, उसका आपने एक इंस्ट्रक्शन जो है कोडिंग की हुई है आपने. अब डेटा सेगमेंट के अंदर डेटा है आपका, लेकिन दैट डेटा इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी कोड. वंस you do not distinguish between the execution code and the data, what can be done कि आप डेटा की भी उन ones and zeros के combination से कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन बन जाएगी. there is a very fair probability. और जब वो इंस्ट्रक्शन बन जाएगी तो सिस्टम एज्यूम करेगा कि दिस इज एन इंस्ट्रक्शन, उसको फेच करेगा और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा. सर्टेनली दैट विल क्रिएट एन हैवक, और वो आपके प्रोसेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है इफ इट इज नॉट वेरी वेल प्रोटेक्टेड. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन असाइन डिफरेंट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट. And that is very conveniently possible in segmentation, and that is not possible in the paging. So let's make, हम जब pages के साथ एक comparison कर रहे हैं तो why not हम तमाम characteristics जो हैं उसको आपस में compare कर लेते हैं. First of all, first parameter हम देखते हैं, need the programmer to aware that this technique is being used. पेजिंग के केस में इट्स ट्रांसपेरेंट, यूजर मे नॉट रिक्वायर्ड टू नो कि पेजिंग टेक्निक इज अप्लाइड, बट सर्टेनली द सेगमेंटेशन में यूजर शुड बी अवेयर, यूजर शुड बी वेल अवेयर कि द सेगमेंटेशन इज बीइंग ऑफर्ड और किस सेगमेंट में आपने क्या काम करना है. सो जब यूजर के पास ये इंफॉर्मेशन होगी तो वो फर्दर
جو ہے ایجوکیٹ ہوگا. مینز a programmer will be well educated and will be programming according to the requirement or according to the environment available to him or her. Next, how many linear address space, یہ بھی ہم نے تھوڑی دیر میں پہلے ڈسکس کیا کہ پیجنگ کے کیس میں دیر از ون سنگل لینئر ایڈریس اسپیس, لینئر ورچوئل ایڈریس اسپیس. لیکن سیگمنٹ کے کیس میں یو ہیو مینی ایڈریس اسپیسز. مینی ایڈریس اسپیسز مینس ون ایڈریس اسپیس پر سیگمنٹ. نمبر 3, کین دا ٹوٹل ایڈریس اسپیس ایکسیڈ دا سائز. یہ تو ورچوئل میموری کی کیریکٹرسٹکس ہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ پیجنگ کی طرح جو سیگمنٹیشن ہے از آلسو کنسیڈرڈ ایز اے ورچوئل میموری مینجمنٹ سسٹم. دیئرفور آپ کے پاس دونوں انوائرمنٹ کے اندر ورچوئل ایڈریس اسپیس کین ایزیلی ایکسیڈ دی فزیکل ایڈریس اسپیس. یاد ہے نا فزیکل ایڈریس اسپیس, فزیکل ایڈریس اسپیس کسے کہتے ہیں؟ آپ کی فزیکل میموری. اور اگر یہاں پر آپ پیجنگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں نا تو اس کے کورسپونڈنگ پیج فریم ہے. تو اسی طرح جو آپ یہاں پر ورچوئل ایڈریس میں سیگمنٹس کو امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو مین میموری کے اندر بھی وہ سیگمنٹ جا کر فٹ ان کرنا ہوگا, اور وہ اس کو ایز اے سیگمنٹ کے طور پر پرفارمنس دینی ہوگی ان آرڈر ٹو میچ یور ورچوئل ایڈریس اسپیس. ہم اس کی بات کریں گے, ہم اس کے اندر فردر کچھ کمپلیکسٹیز تو ضرور ایڈ کرتے, سو اس میں بھی یقیناً کچھ کمپلیکسٹیز ایڈ ہوں گی. سو آئی ول ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر. سو کین دی پروسیجرز اینڈ ڈیٹا بی ڈسٹنگوش اینڈ سیپریٹلی. یہ میں نے بھی لاسٹ سلائیڈ میں آپ کو ایکسپلین کیا کہ آپ سیپریٹلی آپ پیجنگ میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, پیج آپ کے اسکیٹرڈ ہوتے ہیں, لیکن آپ کے سیگمنٹیشن میں آپ کے پاس فیسیلٹی, اور یہی اس کی ایک ون آف دی میجر ایڈوانٹیج ہے. Can table whose size fluctuates be accommodated. یہ ایک طرح سے یہی والی چیز ہے, صرف تھوڑا سا سمجھانے کے لیے. اور ہم نے اسٹارٹ ہی یہاں سے کیا تھا کہ اگر کوئی ٹیبل جو ہے وہ ڈائنامیکلی فلکچویٹ کر رہا ہے, ایکسپینڈ اینڈ شرنک ڈائنامیکلی, سو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو اکوموڈیٹ اٹ ان پیجنگ, بٹ اٹس ایزی ٹو اکوموڈیٹ اٹ ان دی سیگمنٹیشن. Is sharing of procedure between user facilitated. ہم نے دیکھا تھا کہ ہم شیئرنگ آف پروسیجر تو پیجز میں بھی کر رہے تھے, بٹ اٹس اے ویری بٹ اینڈ کمپلیکیٹڈ. یہاں پر آپ دیکھیں گے اٹس ویری سمپل اینڈ ایزی. آپ نے سمپلی اس سیگمنٹ کو شیئر کروا دینا ہے, اینڈ دین یور پروسیجر از دیئر ان دی سیگمنٹ, اینڈ دیٹ پرٹیکولر سیگمنٹ از شیئرڈ بٹوین نمبر آف ڈفرینٹ یوزرز. اور آپ کو یہ بھی پریشانی نہیں ہے کہ جو پیجنگ میں تھی کہ ایکسیڈینٹلی if one process is terminated, the pages related to that process will also be flushed or cleaned or removed from the memory, from the page frames, but that cause a difficulty for other processes which those were sharing those page frames. وہ تمام پروسیسز جو اس کو شیئر کر رہے تھے, اس پروسیس کے ایگزٹ ہونے کی وجہ سے وہ پیجز باہر چلے جاتے ہیں, دیٹ ریزلٹڈ ان پیج فالٹ. لیکن اس کیس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں دس پرٹیکولر سیگمنٹ از اے شیئرنگ سیگمنٹ. آپ انڈیپینڈنٹلی پروسیس ٹرمینیٹ ہو کچھ بھی ہو, اس سیگمنٹ کو آپ نہیں چھیڑیں گے, تو دیٹ ول ناٹ ریزلٹ ان دی پیج فالٹ, اور اس کیس میں سیگمنٹ فالٹ. Why was this technique invented? تو obviously it has certain advantages. پیجنگ کے کیس میں to get larger linear address space, جو کہ ہم نے اوپر بھی بات کی تھی, یہاں پر بات کی تھی, تو to have the larger address space than the physical memory available, تو ہم اس کو پیجنگ کو لے کر آئے تھے. اور پھر پیجنگ کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ سیگمنٹیشن میں دو ایڈوانٹیجز کی ہم نے بات کی, to allow programs and data to be broken up into logical independent address space. پروگرام اور ڈیٹا کو ہم نے سیپریٹ ایڈریس اسپیس پرووائڈ کر دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پروٹیکشن میکینزم جو ہے وہ بڑی کنوینئنٹلی امپلیمنٹ ہم نے کر دیا. سو اٹ واز دی ایسنس آف دس سیگمنٹیشن میموری مینجمنٹ. اب چلتے ہیں تھوڑا سا مشکل والے پارٹ پہ. اس سے پہلے let's talk about the fragmentation. Suppose these are different segments, segment 0, 1, 2, 3, 4. اور یہ کیا چیز ہے پھر یہاں سے یہاں تک جس کے اندر یہ سیگمنٹس ہیں؟
Yes, you are right. یہ physical memory ہے آپ کی. Physical memory میں instead of now providing the pages, now we are providing the segments. اب we are handling an entity, not the page but the segment. And then suppose آپ نے segment 4 ہے, اب آپ نے segment number 7 کو لوڈ کرنا ہے. اگر آپ نے سیگمنٹ 7 کو لوڈ کرنا ہے تو دس از دی سفیشینٹ انف سیگمنٹ. آپ کیا کریں گے کہ اس کو سویپ آؤٹ کرویں گے یا یہ ٹرمینیٹ ہو گیا اور آپ کے پاس یہاں پہ ہول آ گیا اور یہاں پہ آپ نے نیو سیگمنٹ 7 جو ہے نا اس کو لوڈ کر لیا. سملرلی سپوز یہاں پہ سیگمنٹ 4 چلا گیا اور آپ نے اس کی جگہ پہ سیگمنٹ 5 کو لوڈ کر دیا. یہاں پہ آپ کا سیگمنٹ نمبر یہ ہول ادھر آ گیا, ایک ہول ادھر آ گیا اور اب ہم سیگمنٹ 3 کی جگہ پہ سیگمنٹ 6 لے آئیں گے تو ایک ہول ادھر آ گیا. اب یہ جو ہے اگر آپ کو یاد ہوگا ہم یہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سلائیڈ بھی, لیکن پہلے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اور یہ جو یہاں پر ویسٹیج ہو رہی ہے دس از کالڈ دی فریگمنٹیشن اینڈ دس از کالڈ این ایکسٹرنل فریگمنٹیشن. ایکسٹرنل فریگمنٹیشن آپ کی سیگمنٹ کے جو باہر ہوتی ہے ویسٹیج ہولز بنتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل فریگمنٹیشن, یا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو چیکر بورڈنگ بھی کہتے ہیں. اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان تمام سیگمنٹس کو کمبائنڈ کر دیں, کمپیکٹ کر دیں ایک جگہ پر, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مشکل ہے. اچھا یہ سلائیڈ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے لیکن اس میں آپ کو دکھاتا ہوں. دس واز دا سلائیڈ جو میں نے آپ کو پرانی سلائیڈ لاسٹ ٹائم بتائی تھی جس میں ہم نے پروسیس لوڈ کیے تھے. یہاں پر ہم نے کیونکہ اس وقت یہ چیز پڑھی نہیں تھی, ہم صرف پروسیس کی بات کر رہے تھے. اسی آئیڈیا کو ہم نے یوز کیا, یہ بھی ایک سیگمنٹ ہے ویئر وی ہیو پلیسڈ دی آپریٹنگ سسٹم. So the same idea we have now using, and instead of now processes we call it as a segment, and one particular process might be acquiring multiple segment 0 1 2 3 for example belongs to one process. یہ 4-5 نہیں, it will be in the form of quite a few, maybe a few thousands. ہم جب operating systems کی بات کریں گے تو then we will certainly be talking about the number of segments also. ٹھیک, تو یہاں پہ بھی ہم نے بات کی تھی. یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ جو ویسٹیج ہو رہی ہے it is in the form of holes, اور یہ ہول جو ہیں یہ اس میں بن رہے ہیں. لیکن اب ہم ٹیکنیکل ٹرم میں بات کرتے ہیں اور ٹیکنیکل ٹرم میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن. دا ویسٹیج آف دا میموری آؤٹ سائڈ دا سیگمنٹ از کالڈ این ایکسٹرنل فریگمنٹیشن. اگر ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ہے تو پھر انٹرنل فریگمنٹیشن بھی ہو سکتی ہے. یس, دیٹ کوڈ آلسو بی پاسبل اینڈ دیٹ از پاسبل دا ویسٹیج آف دا میموری ود ان دی سیگمنٹ. یا آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا ویسٹیج آف دا میموری ود ان دا پیج. جو پیج کے اندر آپ کی میموری ویسٹ ہوتی ہے وہ آپ کی انٹرنل ویسٹیج ہوتی ہے اور اس کی کو ہم جنرل ٹرم میں کہتے ہیں کہ وہ انٹرنل فریگمنٹیشن ہے اور انٹرنل ویسٹیج آف دا میموری ہے. یہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ہے اور یہ ویسٹیج ہے ڈیو ٹو دی آؤٹ سائڈ باؤنڈری آف اوور اینٹی وچ از دی سیگمنٹیشن. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اینڈ کائنڈلی اس کو یاد رکھیے گا. ناؤ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے. سیگمنٹیشن لاجیکل ایڈریس کنسسٹ آف 2 ٹیوپل. وہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کون کون سا. پہلا تھا ہمارا سیگمنٹ نمبر اینڈ سیکنڈ آف سیٹ ود ان دی سیگمنٹ. ٹھیک بات ہوگی. پہلے تو ہم نے ڈسائڈ کرنا ہے کہ وچ سیگمنٹ وی آر گوئنگ ٹو ریفر. Is it a data segment? It is a stack segment? Is it a code segment? Or even you could have a multiple code segment. You could have a multiple data segment. So, but you need to know that okay, which segment we are referring now. So, first of all, you have to refer the segment. Uske liye first tuple aap use karenge, jo ke kehlayega segment number. اور پھر اس segment کے اندر کتنا آف سیٹ ہے, اسٹارٹنگ آف دیٹ سیگمنٹ سے ڈسٹینس کتنا ہے. سو وی جسٹ لائک دی پیج ٹیبل وی آر ریکوائرڈ ٹو مینٹین اے سیگمنٹ ٹیبل. جیسا پیج ٹیبل تھا نا, پیج ٹیبل میں ہم ورچوئل پیج سے ہم پیج فریم کی طرف جاتے تھے اور اس کا ایک آپس میں لنک اسٹیبلش کرتے تھے اور پھر اس میں ہم کچھ مزید انفارمیشن رکھتے تھے.
وہی انفارمیشن جو ہے اب شاید یا اس سے ملتی جلتی we will be saving it into the segment table. So but basic purpose remains the same جو page table کا تھا. What was that? It maps two dimension physical address. Each table entry یہ وہی ورچوئل ایڈریس کو میپ کرتا ہے فزیکل ایڈریس میں. یہ تو پرائم پرپس ہے. اب ٹیبل کی انٹری کیا ہے؟ ایک تو بیس ایڈریس ہو گیا. اس کا بیس ایڈریس جو ہے وہ بیسیکلی بتائے گا کہ یہ سیگمنٹ جو ہے یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے. آپ نے نمبر تو دے دیا نا، جس طرح آپ نے ورچوئل میموری مینجمنٹ پیجنگ کے اندر آپ نے پیج نمبر دے دیا، پیج نمبر 8220. لیکن یہ پیج جو ہے فزیکل میموری میں سٹارٹ کہاں پر ہو رہا ہے؟ تو بیسیکلی اس کا جو سٹارٹنگ ایڈریس ہے وہ ہم نے پرووائڈ کیا تھا، پیج فریم کا ایڈریس جو تھا. یہاں پر اس سیگمنٹ کا سٹارٹنگ ایڈریس ہے which will be called as the base address. So that contains the starting physical address where the segment resides in the memory. Next, اب ہم لمٹ کا استعمال کر رہے ہیں. لمٹ specifies the length of the segment. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بیس اور لمٹ کو ڈسکس کیا تھا اس سے پہلے بھی، اور اس میں تھوڑا سا کنفیوژن لگ رہا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ جب ہم اس کو ایک اور اس میں جائیں گے تو ہم دیکھیں گے. لمٹ ادھر بھی لمٹ ہی تھی. ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم کہیں آپریٹنگ سسٹم کے ایریا میں تو جمپ نہیں کر کے جا رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یو آر جمپنگ انٹو دی ایڈریس اسپیس آف سم ادر پروسیس. سیم گوز ہیئر. We will see the starting address with reference to the base address, then the size of the segment. جب ہم size of the segment میں we will be restricting our process to stay within the size of the segment. تو basically purpose اس کا وہی ہے جو اس سے پہلے we have been discussing the limit register. ٹھیک، تو یہ دو اینٹیٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں. اب ہمیں پیج ٹیبل کا اسٹارٹنگ ایڈریس چاہیے تھا. Similarly, we need to have the starting address of the segment table. So segment table base register STBR point to the segment table location in the memory, because the segment table, like the page table, should be present in the memory of the computer. تبھی تو آپ اس کو ریفر کر پائیں گے، تبھی آپ اس کی ریفرنسز کو آپٹیمائز کر پائیں گے. اوکے، سو if the segment table has to be into the memory of the computer, then obviously its address of اب segment کی بات نہیں کر رہے، segment table کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے لیے segment table base register points to the starting address of the segment that resides in segment table that resides in the memory. Then segment table length register. اب ہمیں عادت پڑ گئی ہے، سمجھ میں آ گیا ہے کہ جس اینٹیٹی کی بات کرتے ہیں اس کی لمٹ کی بھی بات کر لیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو سیگمنٹ کا جو اسٹارٹنگ ایڈریس ہوگا، سیگمنٹ ٹیبل ہوگا، وہ بھی تو کسی سیگمنٹ میں ہوگا نا. تو وہی بات کہ آپ کے پاس اس کی سیگمنٹ ٹیبل لینتھ رجسٹر ہونے چاہیے دیٹ انڈیکیٹ دی نمبر آف سیگمنٹ یوزڈ بائی اے پروگرام. سوال اگر آپ کے ذہن میں آیا ہو تو اس کا خود بخود جواب مل گیا. ٹھیک، سوال آپ کے ذہن میں کیا آ سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے بھائی اگر یہ ایک سیگمنٹ کے اندر ہے تو اس سیگمنٹ کی لمٹ رجسٹر جو ہے یا اس سیگمنٹ کا لمٹ رجسٹر جو ہے وہ آلریڈی سیگمنٹ کی لینتھ بتا رہا ہے، پھر یہ ایڈیشنل سیگمنٹ ٹیبل لینتھ رجسٹر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال آ سکتا ہے نا ذہن میں. تو اس کا جواب آلریڈی آ گیا. اس کا کیا جواب آیا کہ انڈیکیٹس دی نمبر آف سیگمنٹ یوزڈ بائی اے پروگرام. Segment number S is illegal if S is less than ST segment table length register. اب جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی نا کہ you can allocate multiple segments. جب multiple segments آئیں گے نا تو پھر فار ایگزامپل آ جائے گا کہ جی سیگمنٹ نمبر 9011 سے سیگمنٹ نمبر 9057 تک جتنے نمبر بنتا ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا. تو وہ جو نمبر ہے اس سے پتا چل جائے گا کہ اس پروسیس جو ہے دیٹ پروسیس دیٹ از بینگ ایگزیکیوٹیڈ اس کو کتنے سیگمنٹس ایلوکیٹ کیے ہیں اور ہاؤ مچ دی اسپیس دا پروگرام کین اور پروسیس کین موو انٹو دا میموری آف دا کمپیوٹر. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ جو سیگمنٹ لمٹ رجسٹر ہے تو وہ تو ہر سیگمنٹ کی لمٹ کو بتائے گا، لیکن ایک پروگرام کو ایک سے زیادہ سیگمنٹس ہیں، وہ کتنے سیگمنٹ ہیں وہ آپ کو بات بتاتا ہے سیگمنٹ ٹیبل لینتھ رجسٹر.
आ गई बात समझ में होपफुली। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें कि सेगमेंट, सपोज अब हम शेयरिंग की बात कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ ए सेगमेंट। एडिटर आपको पता है जिस तरह वर्ड प्रोसेसर है आपका, इसी तरीके से कंपाइलर एडिटर है, द नंबर ऑफ यूजर माइट बी यूजिंग दैट। जब एक क्लास में सारे बच्चे दे गो इनटू द लैब एंड डूइंग द सी प्रोग्रामिंग, तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट जो है वो एडिटर यूज कर रहा होता है सी का। तो क्या फॉर 50-40 स्टूडेंट्स जो हैं विच आर प्रेजेंट इन द लैब, तो क्या 40-50 लोड कर दिए जाए इफ दे आर यूजिंग वन मेन फ्रेम कंप्यूटर फॉर एग्जांपल, शेयरिंग द सर्वर दैट इज प्रोवाइडिंग द सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट? नो. The best way is that you can just load the editor into one of the segment, like in this particular example. अगर इस example में हम देखें यहाँ पर, this editor is in segment 0 and the data of this process is in data 1. तो इस process का जो segment table है, that says the starting address of the segment is 43,062 and its size, this is the limit. ओके अगर इसको इसके अंदर आप ऐड कर देंगे तो यू विल गेट दिस एड्रेस। सो ये बताएगा कि ये आपका सेगमेंट नंबर 0 इज दिस वन और इसका स्टार्टिंग एड्रेस इज दिस वन और ओके। देन द डेटा सेगमेंट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 68,348 और इसका साइज इज 4,425। अगर ये इसमें ऐड कर दें तो इसकी ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे खत्म हो गई। Similarly, this is the process number 2. Process number 2 is also using the editor, the same editor, and it is in the same location. So it must be the same also. This entry should also be the same. ठीक है ना? ये 25,286 starting address, sorry, ये 43,062 starting address दोनों के पास same है और इसकी length भी दोनों के पास same है. So it's very easy, very convenient to share the segment among the processes. Okay? और हमने देखा कि एक तरह से हमने थोड़ा सा एक यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया सेगमेंट टेबल का, लेकिन we'll break it out and find out इसकी पूरी डाइसेक्शन, जिस तरह डॉक्टर करते हैं ना डाइसेक्शन, हम इसकी पूरी डाइसेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे टू सी कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में द पर्पस वाज टू शो यू हाउ द टू सेगमेंट्स कुड बी शेयर्ड। एग्जाम्पल ऑफ द सेगमेंटेशन। अब हम शेयरिंग की बात नहीं करते, हम जनरल सेगमेंटेशन की बात करते हैं। थोड़ा सा उसको कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको दिया उसको थोड़ा फर्दर एक्सपेंड करते हैं। नाउ there is a logical address space of one process and this process is using 5 segments, 1 2 3 4 5. There is a main program, one segment में ये जाएगा. There is a subroutine function, subprogram or subroutine, you are using that. Then there is a subroutine of a square root, then there is a symbol table and which is could be a data also, and there is a stack. So the 5 segments are being used. The 0 segment is starting at 1400 and the size is 1000. ये size है इसका 1000. So यहाँ पे 0 segment ends. Segment 1 is starting at 6300. ये जरूरी नहीं कि लॉजिकल उसमें हो, तो वो जो लिमिट है ना, लिमिट आपको बताती है नंबर ऑफ सेगमेंट्स की, कि कितने सेगमेंट्स आपके पास एलोकेट कर रहा है प्रोसेस को। तो उस नंबर ऑफ सेगमेंट से फिर उसके पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से उसको बड़ी आसानी से, क्योंकि अगर हम वो कर देंगे तो मजबूर हो जाएंगे एक कंटिन्यूस एड्रेस स्पेस देने के लिए। लिमिट की बात अगर हम उस तरह नंबर ऑफ सेगमेंट से करेंगे तो यहाँ पर पेज टेबल में अलबत्ता हम उस नंबर ऑफ सेगमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे, और हर सेगमेंट का फिर लिमिट रजिस्टर यूज कर लेते हैं। बात समझ में आई कि अब लिमिट रजिस्टर भी यूज कर रहे हैं, जो मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था कि व्हाई डोंट वी यूज द लिमिट रजिस्टर। सो वी आर यूजिंग the number of segments by the segment length register that contains the number of segment. वो restriction तो हम यहाँ पे apply कर देंगे. Then each segment you need the starting address of each segment. Then you need exactly वही चीज
جو ہم باقی اس کے لیے سیگمنٹس کے یوز کر رہے ہیں, وی آر یوزنگ دا لمٹ. تو اب آپ ادھر باقی بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں, آل دا ریمیننگ سیگمنٹ, ایچ سیگمنٹ containing the base address, that is called the starting address, and then it's the limit, that is آپ کہہ سکتے ہیں اس کا segment کا termination address. اوکے, آگے چلیں. اب اگر ہم اس سارے سینیریو کو تھوڑا سا گرافیکلی سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی پی یو از گوئنگ ٹو ریفر اے ورچوئل ایڈریس اسپیس. بھائی سی پی یو کو تو کچھ نہیں پتا, سی پی یو نے تو کسی ایک انسٹرکشن کے ایڈریس کو ریفر کرنا ہے. When the CPU refers to one particular address space, this virtual address space should be broken up into two components. The first part should describe the segment address, and that should take you into the table called segment descriptor table. یہ میں نے یوز کر بھی ٹرمینالوجی, لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد میں اس کو ہم لکھیں گے بھی. سیگمنٹ ڈسکرپٹر ٹیبل, دیٹ از دی سیگمنٹ ڈسکرپشن. اور ابھی تک جو میں نے آپ کو بتایا کہ سیگمنٹ ڈسکرپشن میں نے آپ کو صرف دو باتیں بتائی ابھی, بیس اور لمٹ. تو جتنا کچھ میں بتا چکا ہوں ابھی اسی کو یوز کریں گے, پھر ہم اس میں مزید ایڈ آن کرتے جائیں گے چیزیں. Now, with the help of this segment number, you can go into the segment table, اور اس ٹیبل کا, سیگمنٹ ٹیبل کا, اس کا اسٹارٹنگ ایڈریس کہاں سے آئے گا, اس کا جواب آپ نے خود دینا ہے. کوئز, آپ کے لیے کوئز ہے, اس کا جواب جو ہے پچھلی سلائیڈز میں موجود ہے. یہاں سے آپ کو اس کا ایڈریس ملے گا, اور یہ نمبر جو ہے یہ اس کے آف سیٹ سے بتائے گا کہ جناب آپ کا یہ ایریا ہے جو کہ اس پرٹیکولر اس کو ریفر کر رہا ہے. اس ایریا کے اندر دو پارٹس ہیں. بیس, جو بیس ہے وہ ہم ایکسٹریکٹ کر کے یہاں پہ لے آئے. لمٹ جو ہے, لمٹ کو ہم نے یہاں پہ لگا کر, لمٹ کو ہم نے کیا کیا, یہ جو آف سیٹ ہے ود ان دی سیگمنٹ, فرض کیا یہ اسٹارٹنگ ایڈریس ہے اور یہ اس کا آف سیٹ ہے. اب یہ جو لمٹ ہے جو یہاں سے آئی ہے, یہ دیکھیے گا کہ یہ جو آف سیٹ ہے یہ لمٹ کراس تو نہیں کر رہا, کیونکہ اس آف سیٹ نے اس لمٹ کو اندر رہنا ہے. لہذا یہ آف سیٹ یہاں پر آیا, اس کو چیک کیا کہ if it is less than that, yes, very good, لمٹ کراس نہیں ہو رہی, اور اگر لمٹ کراس ہو رہی ہے then trap addressing error, لمٹ کراس نہیں کرنی بھائی. اوکے, تو یہ والا پارٹ تو یہاں پہ حل ہو گیا. آسان ہے نا, تھوڑا سا ٹرکی ہے بٹ آسان ہے. اب لمٹ اوکے ہو گئی, جب لمٹ اوکے ہو گئی تو پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے پھر بیس ایڈریس جو یہاں پہ آیا تھا, اس بیس ایڈریس کی مدد سے ہم یہاں پر آ گئے. ٹھیک, بیس ایڈریس کی مدد سے ہم یہاں پر آ گئے, اور یہ جو آف سیٹ ہے, یہ آف سیٹ اب ہمیں یہاں کہیں لے جائے گا. یہی وجہ تھی کہ لمٹ نے اس کو الاؤ کر دیا تھا. اوکے, تو آپ اسٹریٹ فارورڈ نہیں, جس طرح ہمارا وہ تھا لاسٹ ٹائم, ہم پہلے سیگمنٹ نمبر نکالیں گے, سیگمنٹ نمبر سے ہم سیگمنٹ ڈسکرپٹر ٹیبل میں جائیں گے. فرام دا سیگمنٹ ڈسکرپٹر ٹیبل وی ول پک اپ, فار ایگزامپل ایٹ دس اسٹیج اونلی ٹو آئٹم. نمبر 1 is the base and number 2 is the limit. First of all, we will test the limit, whether the process is within the limits. So it will combine, it will pick up this display part, اور اس ڈسپلے پارٹ کو اس لمٹ کے ساتھ یہاں پہ ٹیسٹ کرے گا. اف دا ٹیسٹ از اوکے تو پھر یہ ڈسپلے پارٹ جو ہے یہ آگے چلا جائے گا, ڈسپلیسمنٹ پارٹ جو ہے یہ آگے چلا جائے گا. اب اس ڈسپلیسمنٹ پارٹ میں اسٹارٹنگ ایڈریس اوپر سے آ گیا, تو اس اسٹارٹنگ ایڈریس میں جب ڈسپلیسمنٹ پارٹ ڈالے گا تو یو ول بی ریفرنگ ٹو اسپیسیفک انسٹرکشن. تو یہ سمپلسٹ الگوریدم ہے سو فار. لیٹس موو فارورڈ. میں نے آپ سے کہا تھا نا, ہم چیزوں کو سمپل تو رہنے نہیں دیتے, ہم we keep on improving, and while we are improving, we make the things complicated. اب ہم نے کیا کیا جناب, آپ کو کہتے ہیں سیگمنٹیشن ود پیجنگ. سیگمنٹس کے اندر ہم پھر پیجنگ لے آئے, ہمیں چسکا پڑ گیا شاید پیجنگ کا ہے. دی ایڈوانٹیج اتنی ہے پیجنگ کی. سو وٹ وی ہیو ڈن, وی ہیو کمبائنڈ the two concepts, segmentation with paging. اب ہم ہر سیگمنٹ کے اندر پیج بنائیں گے,
اور یہ جناب ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے وہ ہے ملٹیکس کی اور ایگزامپل ہے آپ کے پینٹیم پی سی کی. ملٹیکس تو چلے جیسے تیسے ہے گزر گیا یا کہیں یوز ہو رہا ہے, بٹ پینٹیم پی سی جو ہے وہ آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں, تو لہٰذا اس کو پڑھنا تو پڑے گا, اس کو سمجھنا بھی پڑے گا. سب سے پہلے ہنی ویل نے ملٹیکس کو ایکسپیریمنٹ کیا اینڈ اٹ واز ہنی ویل 6000 مشین دیٹ یوز دا ملٹیکس اینڈ دیٹ یوز دس آئیڈیا. اینڈ number of segments were 2 raised to the power 18 segments and each segments up to 65,538, یعنی کہ ہر سیگمنٹ جو ہے وہ رفلی کہاں گیا بھائی میرا کرسر, رفلی یہ کتنا ہے, یہ رفلی ہے 64K. 64K سائز ہو گیا, 64K words and each word of 36 bit. اس کی بھی کچھ ریزن ہے جو میں بعد میں کبھی ہم ڈسکس کریں گے. کبھی 32 بٹ کے ورڈ کو کیا ہو گیا, 36 کا کیوں ہو گیا, تو وہ اس میں کچھ بٹس ایسی ہیں جو کہ ہم اسپیشل پرپز کے بھی یوز کرتے ہیں ہر ورڈ کے ساتھ. سو دیٹ از ان پرٹیکولر انوائرمنٹ میں, ملٹیکس کی انوائرمنٹ میں the word size was the 36 bit, not the byte boundary, but it is 4.5 bytes آپ کہہ سکتے ہیں. So 2 raised to the power 18 segments. 2 raised to the power 18 کا مطلب کیا ہو گیا بھائی, 2 raised to the power 8 کا مطلب ہو گیا 256 اور 2 raised to the power 10 کا مطلب ہو گیا 1K. تو 256 کے رفلی ہمارا, کیونکہ K 1000 کا نہیں ہے, K 1024 کا ہے, بٹ رفلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 256,000 یا 256K segments and each segment comprising 64K words. یہ ہے جناب ہمارے ملٹیکس کی نمبر آف سیگمنٹس کی سائز. ایچ پروگرام ہیز اے سیگمنٹ ٹیبل. obviously آپ کو ہر پروسیس کے لیے سیگمنٹ ٹیبل چاہیے, تو اب پروسیس کو ہم پروگرام کہہ رہے ہیں. پیج itself containing segment descriptor. اب پیجنگ آ گئی نا, تو اب ہر سیگمنٹ از پیج itself containing the segment descriptors. اب وہ کیسے ہوگا, we will discuss it later on. Segment descriptor points to the page table. اب اس کے اندر چلتے ہیں, اس کے ڈائسیکشن کرتے ہیں. Now this is the 36-bit address space. اب this address space will be providing us each entry of this segment descriptor provide us the page table. For example, this is the segment 1 descriptor. Segment 1 descriptor will take you the page table segment 1. This is segment 3, it takes you page table segment 3. Okay? تھوڑا سا ذرا concentrate کریں, you will understand that کہ اب آپ کا جو segment کا جو virtual address ہے, that virtual address contains an address of the page table. کیونکہ اب ہم نے سیگمنٹ کے ساتھ پیج ٹیبل کے اندر بھی جانا ہے. اٹ کنٹین سم تھنگ ایلس آلسو. وہ میں جب ابھی ہم اس کے ڈائسیکشن کریں گے نا, اس پارٹ کا ڈائسیکشن کریں گے, تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر اور کیا چیز ہے. بٹ ایک چیز اس کے اندر سرٹن ہے, اینڈ دیٹ از دی سیگمنٹ نمبر اور سیگمنٹ ڈسکرپٹر. اینڈ دیٹ سیگمنٹ ڈسکرپٹر will now contain, instead of the segment number, it contain the address of the page table. اوکے, اور پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ پیج ٹیبل جو ہے should take us to the physical memory. ٹھیک, یہاں سے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کا جو نیکسٹ اسٹیج ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. سو دا ملٹیکس ورچوئل میموری, دی ڈسکرپٹر سیگمنٹس پوائنٹس ٹو دی پیج ٹیبل. اوکے, آگے چلتے ہیں. Segment descriptor says whether the segment is in the memory or not. اس کا مطلب ہے کہ سیگمنٹ ڈسکرپٹر میں نے کہا تھا نا کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی. تو ایک تو اس نے یہ بتانا ہے کہ whether the segment is in the memory or not. Then if any part of the segment is in the memory, then the entire segment is considered to be into the memory. ظاہر ہے کہ جب وہ سیگمنٹ کا اسٹارٹنگ ایڈریس ہے, سیگمنٹ کا کچھ پارٹ میموری کے اندر موجود ہے, the remaining part you just need to bring in. So we assume that if the some part of the segment is in the memory, means that the segment is also in the memory. Virtual address space contains the segment number. اب
पहले तो मैंने सेगमेंट नंबर और ऑफसेट कहा था. अब वर्चुअल एड्रेस पे जो हम जाएंगे फिजिकल मेमोरी में, तो हम जाएंगे कि सेगमेंट नंबर, देन वी हैव अ पेज नंबर एंड देन वी हैव अ ऑफसेट विद इन द पेज. ठीक हो गया भाई. थोड़ी देर पहले हमने बात की थी सेगमेंट को, किसी भी रेफरेंस को विद इन द सेगमेंट एड्रेस करने के लिए वी नीड सेगमेंट नंबर एंड द ऑफसेट. अब हम क्या बात कर रहे हैं? सेगमेंट नंबर, पेज नंबर एंड ऑफसेट. व्हाई? क्योंकि नाउ वी आर सेइंग दैट कि ईच सेगमेंट कंटेन्स पेजेस. तो अब थोड़े होंगे शायद विद इन द सेगमेंट की बात कर रहे होंगे, तो सेगमेंट नंबर, देन द पेज नंबर, देन द ऑफसेट. कैसे हम उसको भी अभी देखते हैं. यहां तो हमने डाइसेक्शन मैंने आपको किए था, अभी इससे मैंने इसको ऊपर ले गए. हम इस ड्राइंग के अंदर ये वाला पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अभी हम इसकी डाइसेक्शन के ऊपर भी फर्दर आते हैं. ठीक है ना. और ये है आपका सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, और मैंने कहा था कि सेगमेंट डिस्क्रिप्टर कंटेन्स आपके हर सेगमेंट डिस्क्रिप्टर जो है वो अपने अपने पेज टेबल के बारे में बताएगा. सो इट इज बेसिकली 36 बिट. ये जो 36 बिट है यहां से यहां तक. अब इस 36 बिट्स की डाइसेक्शन करते हैं भाई, सिंथेसाइज करते हैं, इसके एनालिसिस करते हैं. इसमें जो 18 बिट्स है दैट इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ द पेज टेबल. क्यों भाई? क्विज. क्यों 18 बिट्स? शाबाश. बिकॉज देयर आर 2 raised to the power 18 सेगमेंट्स. तो 2 raised to the power 18 सेगमेंट्स के लिए आपको 18 बिट्स तो चाहिए. वो 18 बिट्स आप पहले से पहले सेपरेट कर दें. व्हाट इज द एडवांटेज फॉर दैट? कि देयर विल बी 2 raised to the power 18 पेज टेबल्स. तो यहां से ये जो आपने यहाँ पे बीच में कर दिया, शो किया सेगमेंट पेज टेबल सेगमेंट 1, पेज टेबल सेगमेंट 3, तो देयर विल बी अ पेज टेबल सेगमेंट नंबर 2 raised to power 18-1 है. तो फिर वो आपको उतने सेगमेंट्स मिल जाएंगे. तो ये बात तो बड़ी आसान सी है. देन द सेगमेंट लेंथ इन पेजेस, इफ इट इज पेज्ड और इफ इट इज वर्ल्ड. सो आपको बताना है कि इस सेगमेंट का लेंथ कितनी है. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ पेजेस हम इसको कर लेते हैं तो जरा आसान हो जाएगा. हम इसको चॉप कर देंगे 9 बिट्स के अंदर. ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. यहां पर भी आ रहा है नेक्स्ट ये आ रहा है जनाब, दिस बिट इज सेज दैट इफ दिस बिट इज इक्वल टू 0 देन द वर्ल्ड साइज, ठीक है, पेज साइज इज 1K. और इफ दिस बिट इज इक्वल टू 1 देन दिस पेज साइज इज 64K. ये बड़े मजे का है, एक दूसरे के ऑपोजिट है. यानी कि अगर 1K पेजेस हैं तो हर पेज के अंदर 64 वर्ड्स होंगे, और अगर 64 पेजेस हैं तो हर पेज के अंदर 1K वर्ड्स होंगे. ठीक है ना. तो वो बेसिकली हम अभी आगे देखेंगे कि उसको कैसे चॉप करते हैं. देन सेगमेंट इज पेज्ड और सेगमेंट इज नॉट पेज्ड. ये बिट बताती है कि सेगमेंट पेज्ड है और सेगमेंट इज नॉट पेज्ड. ठीक है ना. वर्ड्स भी हो सकते हैं. हम सेगमेंट के अंदर चले गए तो बस फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं कि ऑफसेट लेने के बाद कि ये वर्ड ही साइज ही इतना है. देन दिस इज नॉट यूज्ड. उसके बाद है मिसवीनियस बिट्स हैं, चलें छोड़ देते हैं हम, और प्रोटेक्शन बिट्स. 3 प्रोटेक्शन बिट. अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि व्हाट आर दोज 3 प्रोटेक्शन बिट्स. कौन कौन सी? रीड, राइट, एग्जीक्यूट. यूजुअली दीज आर द 3 प्रोटेक्शन बिट्स. और इंटर के केस में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, समथिंग एल्स. ओके. अब अगर हम इसको देखें कि 18 बिट से तो हम आ गए 34 बिट का वर्चुअल एड्रेस स्पेस है इन ओवर मल्टेक्स. उसमें से 18 का तो मैं आ गया जनाब आपके 2 raised to power 18 सेगमेंट्स, एंड ईच सेगमेंट साइज इज कितना बताया था? 64K. तो 64K साइज और 252 टू द पावर 18 नंबर ऑफ सेगमेंट्स. तो 18 और 16K के भी आपको 64K के भी आपको 16 बिट्स चाहिए. तो ये बात तो हमें आसानी से समझ में आ जाती है कि जनाब ये 16 बिट्स जो हैं, ये 16 बिट्स जो हैं हमें 64K का ऑफसेट देंगे विद इन दी सेगमेंट. और ये भी हमें बात समझ में आ जाती है कि 2 raised to power 18 सेगमेंट्स मिलेंगे. बस बाकी बातें हम पढ़ चुके हैं फिर. ओके. कैसे? कि वही अगर पेजेस हैं 2 raised to power 6 कितने हुए? 64.
2 raised to power 6 is equal to 64 pages, and each page size is equal to 2 raised to power 10 means 1K. 1K word, ठीक है, 1K bits या bytes नहीं, 1K word, and each word size is 36 bit. Okay, so 1K word and there could be 64. So 64K words is the size. मैंने आपको बताया था ना 64K words और word size 36 bit बताया था. So you can easily access to that. और जो मैंने कहा था इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसको इससे रिवर्स भी कर सकते हैं. अगर तो वो आपका नॉट पेज्ड है तो आपके आ जाएंगे जनाब 1024 पेजेस, और पेज का साइज जो है वो आपको बताया था ना, दो आपके पास ऑप्शन है, या 64 वर्ड्स का है या 1K वर्ड्स का है पेज साइज, तो वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा. ये 10 इधर आ जाएगा और ये वाला जो 6 है ये इधर आ जाएगा, सॉरी इधर आ जाएगा. ओके, सो व्हाट हैपन्स, अब जो कुछ मैंने आपको ग्राफिकली और चीजों में समझाया उसको जरा हम देखते हैं. व्हेन अ मेमोरी रेफरेंस अकर्स द following algorithm is carried out. सबसे पहले the segment number used to find the segment descriptor. सीधी सी बात है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. So check is made to see if the segments page table is in the memory. वो उसमें बताता है, वो जो भी मैंने आपको बताया था segment descriptor के अंदर, कि whether the segment is in the memory or not. So if not, then the segment fault occurs. If there is a protection violation, once again a trap occurs. प्रोटेक्शन भी है हमारे पास और सेगमेंट इज इन द मेमोरी और नॉट, वो भी हमारे पास है. सेगमेंट इज पेज्ड और मिसवीनेट बिट, प्रोटेक्शन बिट, इसमें एक बिट है जो बताती है कि वेदर द सेगमेंट इज इन द मेमोरी और वेदर द सेगमेंट इज नॉट इन द मेमोरी. ये भी हम फर्दर खोलेंगे आगे टीएलबी में, जहां पे हम पेज टेबल के हिसाब से हम पेज टेबल में देखेंगे इंफॉर्मेशन. ओके, पेज टेबल एंट्री फॉर द रिक्वेस्टेड वर्चुअल पेज is examined. अब जब आप सेगमेंट का मसला हल कर लिया तो अब आप जाएंगे वर्चुअल एड्रेस स्पेस आपने बना ली, क्योंकि हम पेजेस को हैंडल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्चुअल एड्रेस स्पेस. वो हमने सीखा हुआ तरीका, हमने अब तक जितना सीखा सेगमेंट के हवाले से, उससे हम लेकर आएंगे वर्चुअल एड्रेस स्पेस. और वर्चुअल एड्रेस स्पेस के तो फिर आगे से हम चैंपियन हैं, हम वो सारा पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस से हमने किसी मेमोरी को कैसे रेफर करना है. एट दिस पर्टिकुलर टाइम वी अज्यूम कि हमारी फिजिकल मेमोरी जो है वो एक सेगमेंट के अंदर है. अगर वो एक सेगमेंट के अंदर है तो फिर जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस से जैसे कि हम पूरी फिजिकल मेमोरी को एक्सेस करते थे, वैसे ही हम सेगमेंट के इंटरनल पार्ट जो है विल बी एक्सेसिंग दैट. ओके, सो इफ द पेज इटसेल्फ इज नॉट इन द मेमोरी, अ पेज फॉल्ट इज ट्रिगर्ड. Then if it is in the memory, the main memory address of the start of the page is executed from the page table entry. Logical बात है. The offset is added to the page origin to give the main memory address where the word is located. ये भी हम पेजिंग में पढ़ चुके हैं. The read and write finally takes place. तो ये है भाई हमारा एल्गोरिदम जो कि 2 स्टेप्स के अंदर अब बेस कर रहा है. ओके, तो अभी हम स्टेप नंबर 2 की बात कर रहे हैं, और स्टेप नंबर 2 में ये हम बात करें, ये हमारा 34 बिट का वर्चुअल एड्रेस स्पेस एक दफा जब बन गया तो हमने इसको हम देखते हैं कि कैसे काम करेगा. सॉरी, ये यहाँ पे आएगा स्टेज 2, ठीक है ना. अभी हम स्टेज कंप्लीट उसकी बात करते हैं. पहले से हमने सेगमेंट नंबर दिया. ओके, हमें स्टार्ट ऑफ द सेगमेंट डिस्क्रिप्टर ये कहां से मिला, ये आपके ये वही क्विज है जो मैंने आपको बताया था कि पिछली स्लाइड में आंसर मौजूद है. आपके पास सेगमेंट डिस्क्रिप्टर जो है उसको आप फाइंड आउट करेंगे और इस सेगमेंट से आप सेगमेंट डिस्क्रिप्टर के अंदर जाएंगे. सेगमेंट डिस्क्रिप्टर आपको पेज टेबल का एड्रेस बताएगा और उससे आप पेज टेबल के एड्रेस में आ जाएंगे. यहाँ पे आपका पेज नंबर ऑफसेट देगा आपको और ये बताएगा कि यहां से यहां तक आपने कितना जाना है, ये वाली बात आपको ये बताएगा. ये आपको पेज फ्रेम के अंदर भेजेगा. ये आपका पेज फ्रेम का इसने स्टार्टिंग एड्रेस बताया, पेज फ्रेम नंबर. यहां से आपने क्या निकाला था, पेज फ्रेम नंबर. पेज फ्रेम नंबर जो है वो आपका पेज का स्टार्टिंग एड्रेस बताएगा और ये ऑफसेट बताएगा कि इस फ्रेम के अंदर आपने कितना ऊपर जाना है. ठीक, ये पार्ट हम पहले पढ़ चुके थे पेजिंग के अंदर, ये हमने पार्ट ऐड किया. इट्स वेरी सिंपल. ओके, और अगर हम इन दोनों को, शायद मैंने कंबाइन किया अगली स्लाइड में, यस, अब दोनों पार्ट को कंबाइन कर देते हैं.
ये आप घबराए नहीं, ये वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट, याद है ना, सेगमेंट डिस्क्रिप्टर और जनाब डिस्प्लेसमेंट, उसका आ जाएगा एड्रेस ऑफ द सेगमेंट। तो सबसे पहले आप ये क्या चीज है, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, इसके अंदर आपने ऐड किया ये सेगमेंट नंबर, वही बात है ना। ये आपको बता रहा है सेगमेंट टेबल कहां पे पड़ा हुआ है, और ये बता रहा है सेगमेंट टेबल की कौन सी एंट्री में जाना है। वहां से जनाब आपने दो चीजें निकाली, सेगमेंट लेंथ, और इस सेगमेंट लेंथ को हमने देखा कि ये लेस देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट में है कि नहीं, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर ये यस है तो जनाब ये वाला डिस्क्रिप्टर इज ओके, और इस डिस्प्लेसमेंट को हमने यूज करना है पेज टेबल के अंदर। अब हमारे पास दूसरी चीज है इसके अंदर सेगमेंट लेंथ, और दूसरी चीज है वो जो बेस एड्रेस है, बेसिकली वो पेज टेबल का बेस एड्रेस बन गया। यहां से हमने बेस एड्रेस से पेज टेबल का एड्रेस निकाला। इधर से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, ये डिस्प्लेसमेंट है, पेज नंबर एंड ऑफसेट, ठीक। लिहाजा इस डिस्प्लेसमेंट को दो पार्ट में किया, ऑफसेट और पेज नंबर। इस पेज नंबर को स्टार्टिंग एड्रेस के साथ ऐड किया तो पेज फ्रेम आ गया हमारे पास। अब इस पेज फ्रेम से ये आपका पेज फ्रेम नंबर आ गया, इस पेज फ्रेम के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ गई, तो आपका टू पार्ट मल्टीप्लेक्स एड्रेस इनटू अ मेन मेमोरी एड्रेस इज एक्सप्लेन्ड, ठीक है। अगर ये सारा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया तो अब ये मैंने अलहदा से ड्राइंग आपको एक्सप्लेन की थी, ये ड्राइंग मैंने आपको अलहदा से एक्सप्लेन की, इन दोनों को कंबाइन कर दिया हमने, ठीक हो गया। सो मल्टीप्लेक्स टीएलबी, translation leukocyte buffer, we have very good understanding of TLB because we have already studied that. So we use TLB here also in the segmentation so that it is within the CPU, within the MMU, memory management unit, so you don't need to go into the memory, और memory references जो हैं उसको minimize कर सकते हैं। We have talked about lot of memory references here, उसको ट्रांसलेट करने के लिए, और अगर आपको हर इंस्ट्रक्शन के लिए ये सारा कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम चलाना पड़े देन इट विल बी वेरी वेरी स्लो, और इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वेरी इनएफिशिएंट प्रोसेस। सो इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज दिस प्रोसेस वी वंस अगेन आर यूजिंग transmission leukocyte buffer, where we can just keep even 14 TLB entries or maybe 64 TLB entries depending upon the availability. Then the keep address of the 16 most recently referenced pages, वही बात जो हम पहले एल्गोरिथम ऑफ लोकेलिटी की बात कर चुके हैं उसी के सामने रखते हुए वही बेसिकली कोई नई चीज नहीं है, न्यू आर्गुमेंट्स नहीं है, आर्गुमेंट वही है जो हम पेजिंग में पढ़ चुके हैं, सिर्फ सम अप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी वी आर यूजिंग इट. If we are using it, so that's why we are discussing it here. So the addressing hardware checks to see if the address is in the TLB. If so, gets the address from the TLB very quick and fast because it is within the hardware. If not, then it invokes the algorithm check descriptor. वो जो algorithm मैंने आपको steps में भी बताया और वो algorithm मैंने आपको drawing में भी बताया. Okay? So far so good. और ये है जनाब एंट्री, मैंने कहा था ना कुछ चीजें आपको हम बताएंगे और ये उसकी रेफरेंस है वेदर इट इज इन द मेमोरी और नॉट. जब आप टीएलबी को फ्लश करते हैं, आप कैश को फ्लश करते हैं, तो दिस इज लाइक अ कैश. जब आप इसको फ्लश करते हैं तो सिंपली क्या करें, इस एंट्री को जीरो कर देते हैं. इफ दिस एंट्री इज 1 मींस दिस इज अ वैलिड एंड रिलेटिव entries, relative information with respect to the process is being executed. Once the process is terminated, all these bits will be 0 और आपको physically इसे flush करने की जरूरत नहीं है. Then this is the segments which are available in TLB, segment number 4, 6, 12 and segment number 2. Okay, and these are the pages. सेगमेंट नंबर 2 के 2 पेजेस हैं तो ऑब्वियसली इसकी 2 एंट्रीज आ रही हैं यहाँ पर, क्योंकि सेगमेंट नंबर 2 का पेज नंबर 1 विच इज अ कोड सेगमेंट, क्योंकि एग्जीक्यूट ऑन वी प्रोटेक्शन है, एंड पेज नंबर 2 आर देयर. पेज नंबर 3 ऑफ सेगमेंट नंबर 12 एंड दीज आर द रीड एंड राइट. दिस इज रीड ऑन वी
For example, this is something which has a restriction, it is a read only, and this is read write, اور یہ آپ کا کوڈ سیگمنٹ ہوگا which is read and write. So یہ آپ کا پرپز ہے پروٹیکشن کا. جو پروٹیکشن فالٹ آتا ہے اگر آپ ڈیٹا سیگمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کریں تو پروٹیکشن فالٹ آئے گا. اینڈ دس از دی پیج فریم نمبر دیٹ ٹیکس یو دی پیج فریم ود ان دی سیگمنٹ. اوکے, سو آلموسٹ یہ وہی چیز ہے جو ہم اس سے پہلے پیجنگ سسٹم میموری مینجمنٹ میں پڑھ چکے ہیں. Let's talk about our friend Pentium. Okay, nowadays we are using the Pentium machine, so that has also segmentation with paging. Pentium में भी segmentation है और सोने पे सुहागा, this segmentation is also paged. 12, I'm sure that we are quite a good knowledgeable up till now, اور ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. So it's a 16-bit basically سلیکٹر یا ڈسکرپٹر. بعد میں بتاؤں گا کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں. بیسیکلی دس از کالڈ a Pentium selector 16-bit. This is the index and then it contains this bit is equal to 1 means کہ it is a local descriptor table and if it is 0 it is a global descriptor table. Local اور global وہ ہم بات کریں گے کہ later on کہ کس کے لیے local اور کس کے لیے global. So the Pentium has 16K independent segments. اب وہ اس کو بھی ہم اس کی باؤنڈریز کو ورڈز جو ہے اس کے سائز کا جو ہے وہ ہم ان کی بٹس کو یوز نہیں کرتے. تو بیسیکلی دس وی یوز اٹ ایز این انڈیکس آف 13-bit that takes you to the 16K independent segment. Each holding up to 1 billion of 64K word. ملٹیکس میں کتنا تھا نہیں یاد تو پیچھے جا کے دیکھیں. ٹھیک, اس میں 16 کے نمبر آف سیگمنٹس ہیں. وہاں پہ ورڈکس میں کیا تھا 16 کے سائز تھا اور 2^18 نمبر آف سیگمنٹس تھے. یا نمبر آف سیگمنٹس تو کم ہو گئے, نمبر آف سیگمنٹس آ گئے 16 کے انسٹیڈ آف 256 کے. یہاں پر 16 کے ہیں لیکن ہر سیگمنٹ کا سائز یہاں پہ کین گو اپ ٹو 32-bit 1 billion 32-bit word 1 gigabyte کے ہو سکتے ہیں اور each word is of 32-bit. تو 2^30 is the size of each segment that can grow up to this size. Okay, it may not, but it has the potential that the segment size could grow up to 1 billion means 1 gigabyte. Local descriptor table describes the segments local to each program, وہ جو میں نے اوپر بات کی تھی. اور global descriptor table describe the system segment including operating system. اب operating system تو سارے segments کے بھی ہے نا, سارے processes کے بھی ہے. That's why we call it as کہ operating system جو ہے is a global ہے. اور global means all processes کے لیے global ہے, where the program جو ہے اس کا process ہے وہ local ہے. So basically you can have a local descriptor table or global descriptor table that distinguish between the process or the segment کہ یہ segment جو ہے کس کو belong کرتا ہے, ایک independent local process کو کرتا ہے یا یہ system segment ہے جو کہ globally available ہے multiple processes کو. اب اس کی ہم تھوڑی سی ڈائسیکشن دیکھتے ہیں, اس میں خاصی انفارمیشن ہے اور دس از 4 byte کا یہ اینڈ 4 bytes آر ابو دیٹ. سو بیسیکلی دیز آر دی ڈائسیکشن آف اوور Pentium segment descriptor comprises 8 bytes. اب اس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو بٹ نمبر 0 سے لے کے بٹ نمبر 15 تک, بٹ نمبر 0 سے لے کے بٹ نمبر 15 از دا بیس ایڈریس. اس کے بعد میں نے تو آپ کو بتایا کہ یہ جائے گا 1 بلین تک, تو 16 بٹ سے تو جا نہیں سکتا, لہٰذا بٹ نمبر 16 سے 23 از ہیئر اور بٹ نمبر 24 سے 31 تک ہے. ٹھیک, تو یہ ہوگا 2^31 -1. تو یہ بیسیکلی آپ کا بن جائے گا, آپ کا ایڈریس جو ہے وہ 1 GB, رادر یہ بن جاتا ہے 2 GB کیونکہ
टू इस पावर 30 इज 1 गीगाबाइट, और जो 31वीं बिट है वो 2 हो गया, तो 2 गीगाबाइट हो गया। लेकिन क्योंकि साइज जो है आगे 432 बिट्स हैं विद इन दी वर्ड ऑल्सो। ओके, सो देन दी लिमिट के लिए 0 से लेके 15 तक हम यहाँ पे यूज करते हैं, और 16 से लेके 19 तक। और हम फिर जनाब लिमिट इज इन, ये है फ्लेक्सिबिलिटी टू अकोमोडेट द स्मॉलर प्रोसेसेस आल्सो। दैट्स व्हाई हो सकता है कि अगर आप ज्यादा एड्रेस स्पेस नहीं चाहिए, प्रोसेस का साइज इज टू स्मॉल, तो आप सिर्फ यहीं से काम चला सकते हैं। और अगर प्रोसेस का साइज इससे बड़ा है तो फिर आप ये बिट ऐड कर लेंगे, और अगर प्रोसेस इससे बड़ा है तो फिर आपको ये बिट्स भी ऐड करनी होगी। बट अगर नॉर्मल प्रैक्टिस में इफ यू डोंट नीड इट, यू जस्ट वुड बी यूजिंग दिस वन। इनको मास्क कर देंगे। मास्क का आपको पता है क्या होता है कि फोर्सफुली जीरो कर सकते हैं उन बिट्स को। नाउ लेट्स सी, दिस बिट इंडिकेट दैट द लिमिट इज इन बाइट और लिमिट इज इन पेजेस। ओके, क्योंकि ये बाइट में भी हो सकता है और पेजेस के अंदर भी हो सकती है। देन D means 16-bit segment, और if this is equal to 1, 0 means 16-bit segment, और अगर ये 1 है तो इसका मतलब है कि 32-bit segment, और अगर 0 है तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ इतना ही और इससे ही काम चल जाएगा अगर हमारा 16-bit का सेगमेंट्स को हम ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, this bit is forced 0 as its own internal use, and this bit P, it says that the segment is absent from the memory, segment is present or segment is absent. Okay, that bit is there. Then DPL is a privilege. ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट स्लाइड में आज की कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये भी एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, और privilege, sorry, this is a privilege level, वो है 2 bits हैं, वो भी यहीं कहीं होंगी 2 bits. Okay, this is system or application, and this is the protection type. Okay, and this is basically the dissection of the paging system. अगर ये इतना complicated आप समझ रहे हैं कि it's too complicated, just relax. आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जो कि मैं आपको ग्राफिकल फॉर्म में, ये पेंटियम के बारे में बात कर रहा हूं कि पेंटियम के केस में आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि इट कैन फैसिलिटेट up to 16-bit B and up to 32-bit B, and then it has got all the information that is present in the segment descriptor. Using this information, it implement the addressing technique. Okay, segmentation with paging. अच्छा, ये है कोड सेगमेंट के लिए। डेटा सेगमेंट के लिए इट इज स्लाइटली डिफरेंट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपके लिए इतना काफी है, इसके अंदर फर्दर डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्या है। This is a 32-bit address space, 20 and 12 32-bit address space. Top 10 bits gives you the page directory. यहाँ पे आपके पास इसका एक एड्रेस होगा, और ये एड्रेस जो है वो बताएगा कि आपकी पेज डायरेक्टरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है. Then you can use this part to go into the page directory. From the page directory you pick up the starting address of directory entry points to the page table, जिस तरीके से मल्टेक्स कर रहा था. फिर ये जो 10 बिट्स हैं लीनियर एड्रेस स्पेस, ये आपको ले जाएगा इस ऑफसेट के लिए, और यहां से यू विल पिक अप दी पेज एड्रेस, और ये जो पेज एड्रेस है ये आपको प्रोवाइड करेगा वो पेज फ्रेम, और पेज फ्रेम के अंदर जाने के लिए आपको ये बताएगा ऑफसेट. वही ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट है, और उसको मैंने कहा कि सिंप्लीफाई करके एक पेज डायरेक्टरी एंट्री आ गई, दूसरी पेज टेबल एंट्री, और तीसरी ऑफसेट विद इन द पेज. So this is the mapping of the linear address space into the physical address space. थोड़ा सा इसको फर्दर खोल के देख लेते हैं. इसका भी वही पार्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ सिलेक्टर. सिलेक्टर से आप सेगमेंट डिस्क्रिप्टर निकालते हैं, और सेगमेंट डिस्क्रिप्टर आल्सो गिव्स यू द सेगमेंट टेबल. Okay, that contains the segment descriptor table, and this segment descriptor table में this is the address. यहाँ से आप segment descriptor निकालेंगे और इसके अंदर offset ऐड करेंगे, और इससे आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा. पार्ट 1 क्या कंप्लीट होगा कि अब आपके पास एक लीनियर एड्रेस स्पेस आ गई. यहाँ पर यहाँ से अपने सेगमेंट्स निकाल लिया,
ऑफसेट निकाल लिया, और इस ऑफसेट को इधर आपने फिट इन करके 32 बिट की आपने एक वीनियर एड्रेस स्पेस निकाला। अब इस ऑफसेट को आपने देखें, यहाँ पे ऑफसेट का साइज बड़ा है और यहाँ पे ऑफसेट का साइज छोटा है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट साइज। योर सेगमेंट कुड बी ऑफ 64K और योर सेगमेंट कुड बी ऑफ 1 बिलियन पेज 1 गीगाबाइट साइज। देन उसके बाद वही डायरेक्टरी एंट्री जो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, और मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्टरी एंट्री का जो एड्रेस होगा वो आपके पास एक सेपरेट रजिस्टर के अंदर है। देन यू कैन यूज द पेज टेबल एंड देन फ्रॉम द पेज टेबल यू फाइंड आउट द पेज फ्रेम एंड देन यू कैन गो। तो अब तक आप इसके चैंपियन हो चुके होंगे और आई एम श्योर कि अब आपको समझ में आ गया कि कैसे परफॉर्म करता है। सो 2 लेवल कन्वर्जन ऑफ द एड्रेस ट्रांसलेशन इन पेंटियम 386। ये मैंने आपसे कहा था कि आपको याद रखना जरूरी है कि आपका जो वर्चुअल एड्रेस है जो सीपीयू रेफर करता है वो एक लॉजिकल एड्रेस है। दैट टेक्स यू टू आवर सेगमेंटेशन यूनिट। दैट सेगमेंटेशन यूनिट ट्रांसलेट दैट एड्रेस टू द लीनियर एड्रेस ऑफ पेजिंग। From the paging you can just translate and go into the physical address. और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये P1 is the page number, this is also the directory entry, this is the page and this is the offset जो मैंने भी आपको explain किया। तो ये इसका simplified explanation है। So both segmentation, Pentium support both segmentation and segmentation with paging, यानी कि आप प्योर सेगमेंटेशन भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड सेगमेंटेशन विद पेजिंग भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद इन द इंटेल पेंटियम। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सीपीयू जनरेट्स अ लॉजिकल एड्रेस, अभी जो पिछली स्लाइड में बताया मैंने, दैट गिवन टू द सेगमेंटेशन यूनिट। सेगमेंटेशन यूनिट प्रोड्यूस द लीनियर एड्रेस, ठीक, और दिस लीनियर एड्रेस इज गिवन टू द पेजिंग यूनिट विच जनरेट द फिजिकल एड्रेस। मैं आपसे कहा ये वाला एल्गो आपको जरूर आना चाहिए, ये स्टेप्स आपको सारे पता होने चाहिए। 2 स्टेप है, पहले स्टेप के अंदर सेगमेंटेशन रिजॉल्व हो रहा है और दूसरे सेगमेंट के अंदर पेजिंग रिजॉल्व हो रही है। तो पेजिंग का पार्ट आपको पता है, सेगमेंटेशन का पार्ट पता है, मैंने आपको मल्टीपल स्टेप्स में भी दिखाया है और आपको डिफरेंट बुक्स से ड्राइंग्स पिक करके कंबाइंड की हैं दिस लेक्चर के लिए, ताकि आपको पिक्टोरियल फॉर्म एज वेल एज दी एल्गोरिथमिक फॉर्म में भी आपको समझ में आ जाए। सो द पेजिंग यूनिट इज हैंडल्ड फ्रॉम इक्वल टू MMU, ठीक। सिलेक्टर, यहाँ पे वही चीज, अगर तो आप यूज कर रहे हैं विदाउट पेजिंग, अगर यूज कर रहे हैं तो आप वही चीज आएगी इसमें जो स्टार्ट में मैंने मल्टेक्स के लिए बताया था। बेस एड्रेस है, लिमिट एड्रेस है और अदर फील्ड्स है। यहाँ से आप बेस एड्रेस से आप उस सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस में जाएंगे, इसमें सिंपली ऑफसेट ऐड करेंगे और आपकी 32 बिट की लीनियर एड्रेस स्पेस बन गई और आप 32 बिट का आप सेगमेंट, हर सेगमेंट का साइज 32 बिट और यू कैन हैव अ 64 बिट यहाँ पे वो आ गया, ओके। और ये है उसकी सिलेक्टर जो कि सेगमेंट डिस्क्रिप्टर देगा और यहाँ से ऑफसेट और ये 32 बिट का लीनियर एड्रेस स्पेस बन गई। पिछली वाली ड्राइंग को एक और वर्जन है। ये है आपके पास दोनों ऑप्शन। अगर आप इफ यू आर इंप्लीमेंटिंग द पेज साइज ऑफ 4 किलोबाइट और पेज साइज ऑफ 4 MB, तो आप इस वर्चुअल एड्रेस स्पेस की चॉपिंग करेंगे। वर्चुअल एड्रेस स्पेस की चॉपिंग कैसे करेंगे? ये तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, that is 32 to this one, so basically this gives you the page directory. From page directory you pick up the address and that could be the address that is split up into 2 form page table, okay। ये आप देखें आपके पास 10 बिट्स का पेज टेबल है और ये 12 बिट्स आपके पास 0 से 11 तक आपके पास बन गई ऑफसेट। इससे आपका पेज साइज जो आएगा 4 किलोबाइट का आएगा। यहां पर क्या है कि यहां पर आपके पास यू आर यूजिंग ऑल दोज 22 एंट्रीज फॉर 4 मेगाबाइट। 4 मेगाबाइट मीन्स 22 एंट्रीज, 22 2 raised to power 2 and 2 raised to power 20, that is 4 megabyte। यहां पर हमने 22 एंट्रीज को ब्रेक किया था पेज टेबल में और ऑफसेट में, क्योंकि ये पेज थी। यहां पर इट्स नॉट पेज्ड, क्योंकि पेज तो है लेकिन ये आपका पेज टेबल का काम कर रहा है। और ये 22 की 22 बिट्स जो हैं दैट आर यूज्ड एज, ये आपकी 22 बिट्स है, दे आर यूज्ड एज एन ऑफसेट विद इन दी 4 मेगाबाइट पेज।
یہاں پہ ہم نے 22 بٹس کو بریک کیا اینڈ دی ٹاپ 10 بٹس وی گو انٹو دا پیج ٹیبل. وہاں سے ہم نے پیج فریم نکالا اور اس پیج فریم کے ہمارے پاس آف سیٹ موجود تھا. یہاں پہ ہمارے پاس صرف ہم نے پیج فریم نکالا ڈائریکٹری انٹری سے, اور اس پیج فریم کے اندر وٹ وی ہیو ڈن کہ اس کا آف سیٹ ہی آ گیا. اوکے, تو یہ دونوں آپشنس ہیں. You can implement it, and the obviously it has been implemented it into the operating system. While configuring the operating system at your environment, the system administrator can have the option and the selection for setting up the environment. Okay. Segmentation with paging, protection in Pentium. The Pentium supports 4 protection levels, with level 0 is the most privileged جہاں پہ کرنل ہوتا ہے, and level 3 is the least privileged جہاں پہ یوزر کے پروگرام ہوتے ہیں. So obviously if there are 4 levels then you need to have a 2 bits, جو میں آپ کو وہاں پہ mistaken بھی کہہ رہا تھا, وہ تو privilege level تھا. Protection bits are in PSW, process status word, جو آپ کا ایک رجسٹر ہے PSW, اس میں 2 bits ہیں جو بتاتی ہیں کہ which is the protection level. So attempts to access the data at the higher level are permitted. Means 0 say can go to 1, 1 can go to 2, 2 can go to 3. But vice versa is not allowed. So attempts to call a procedure at different level, higher or lower, are allowed but in a controlled manner. Kaise? To make an internal level call, the call must contain a selector instead of address. یہ selector جو ہیں are the entry points. پہلے یہ چیک کرتا ہے, this selector designates a descriptor called a call gate. ایک entry point ہے اس procedure کے لیے جو کہ اس کے through آپ کو صرف access ملتی ہے, which gives the address of the procedure to be called. وہ ڈائریکٹ آپ اپنے پروگرام میں کال نہیں کریں گے, بلکہ آپ کے جو کال ہے that must contain a selector instead of the address. اگر آپ ایڈریس یوز کر رہے ہیں تو اٹس مین آپ ڈائریکٹلی کال کر رہے ہیں پروسیجر کو. اوکے, سو وچ گیوز دی ایڈریس آف دا پروسیجر ٹو کال, thus it is not possible to jump into the middle of any segment. اور اگر اس کی آپ ڈرائنگ دیکھیں تو دس از دی ڈرائنگ اینڈ جو کہ بتا رہی ہے کہ دس از دا موسٹ پریویلیج. کہاں گیا ابھی میرا کرسر, یہ رہا. 0, 1 is for the system calls, 2 is for your shared libraries, and 3 is for your user programs. So یہاں سے یہاں تک تو addressing is allowed. اگر ادھر جانا ہے پروسیجر کال کرنے کے لیے تو obviously اس کے لیے اسپیشل پروسیجر ہے, بٹ ڈیٹا کے لیے آپ ادھر نہیں جا سکتے. So this is the protection on the Pentium. Although I have got a few more slides جو کہ آپ کو Windows XP and Solaris کا بتائے گا, but I think I should stop here. And جب میں آپ کو case studies کرواؤں گا Windows کی and Unix کی, so then I will be sharing with you the how these things are implemented in the Windows environment and in the Unix environment. So dear students, with this we have come to the end of the memory management. میں نے آپ سے کہا تھا اگر آپ کو میموری مینجمنٹ سمجھ میں آ گئی, اور جب 2 IT پروفیشنلز آپس میں میموری مینجمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو that distinguish them as an IT professional. It's not very difficult and very complicated provided you have spent time in reading and listening my lectures. تو میں آپ سے once again میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی ان لیکچرز میں بہت زیادہ ٹیکنیکل انفارمیشن ہے. اس لیکچرز کو, میموری مینجمنٹ کے لیکچر کو 1 بار 2 بار 3 بار آپ سنیں, پھر آپ اس اپنی ٹیکسٹ بک کو اسٹڈی کریں. I have brought the examples from some other books that I have given and included in this presentation. So please go through that. I'm sure you will be able to understand that. So inshallah اگلے لیکچر میں we will start with the next chapter. اور تب تک کے لیے خدا حافظ, اللہ نے کے بعد.